Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to share another subtopic that is solid waste management. आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हमने बात की थी व्हाट आर द सॉलिड वेस्टर्स, what are the various types, or that is classification of the solid wastes. And apart from that, we have already discussed the sources of the solid wastes, impacts of the solid wastes, and causes of the solid wastes. ये चीज़ें हमने already discuss की है. Today we are going to deal with this another subtopic that is solid waste management. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. So far as the solid waste management is concerned, first we must know what is the solid waste management. Solid waste management according to Britannica. अगर ब्रिटानिका मतलब के हिसाब से जिस solid waste management जो होता है it refers to the collecting, treating and disposing of the solid materials which have been discarded because they are of no use now, they are of no use to the owner, or we can say they are of no use to the owner. तो उसमें जो कलेक्टिंग होती हैं, ट्रीटमेंट होता है, या इसकी फिर हम ये कहेंगे कि डिस्पोजल होता है, इसको हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर इम्प्रॉपर, इट मस्ट बी प्रॉपर, द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मस्ट बी प्रॉपर. तो इफ the improper solid waste management, it may lead to the several, it may create several problems, like it may create the unsanitary conditions which may which may lead to the environmental pollution and outbreak of vector-borne diseases, that is the diseases which are transferred, which are carried by the rodents and the insects. So इस तरह भी हम कह सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली इट इज ऑल अबाउट द चेंजिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल into useful resources. Every household, every household must embrace this solid waste management. And the efficient and the efficient and effective solid waste management, it involves the following key components. There are these key components of the effective and efficient solid waste management are number one. जो पहला कंपोनेंट इसमें हम मतलब देखेंगे, दैट इज जेनरेशन. दूसरा जो है जनरेशन के बाद स्टोरेज, फिर तीसरा कलेक्शन के बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड इट इज फॉलोड बाय सेग्रीगेशन या सेपरेशन. तो then processing and ultimately by disposal. So the effective and the efficient solid waste management, it involves the following key components, that is generation, storage, collection, transportation, segregation, processing and ultimately it is disposal. पहले हम देखेंगे कि जनरेशन किसको हम कहेंगे. Generation it represents that stage at which the solid wastes, they are discarded because they are valueless to the, they are of no use, or they are valueless, they are useless now to the owner, and he wants
or he wants to get rid of them. तो इस स्टेज पे जो होता है उसको हम जनरेशन कहते हैं, जब इसको ये ज़रूरत पड़ती है, मतलब ये लगता है कि नाउ इट इज़ नॉट ऑफ माय यूज़। तो जब इसकी यूजलेस ये बनता है उसके लिए, तो उसको वो ये फिर डिस्कार्ड करता है, तो वहाँ पे ये जनरेट फिर होता है, दिस नोन एज द जनरेशन सिंपली। तो दूसरा जो होता है स्टोरेज। हाँ, तो जो इसमें storage, that is the another key component of this of the solid waste management. It involves the keeping of the solid waste materials after they have been generated. तो मतलब prior to its हम ये कहेंगे डिस्पोजल, यानी कि दिस इन्वॉल्व्स द दिस इन्वॉल्व्स जो कि ये स्टोरेज होते हैं। स्टोरेज सिंपली इट मीन्स इट इज ए सिस्टम फॉर कीपिंग मटेरियल्स or keeping the solid waste materials prior to their proper disposal. तो इसको हम कहेंगे कि ये आता है इसमें स्टोरेज। बेसिकली द इफेक्टिव, द मोस्ट एफिशिएंट और द इम्प्रूव्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, these include the large containers large containers in the form of oil drums or community bins. These include the smaller containers in the form of household bins, in the form of plastic bins. These include the shallow pits, तो वो भी इसमें आते हैं। तो apart from that, these include the community depots community depots भी इसमें आते हैं। So this is regarding the storage. Then the another key component is the collection. जो इसका तीसरा है that is collection. Collection simply it refers the collection of waste materials from the point of its generation to the point of its disposal or treatment. तो उसको हम collection कहेंगे। From the point of its production to the point of its disposal, तो उसमें हम collection कहते हैं। There are various ways by which the solid waste materials they are collected. These include house to house collection. यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे बिल्कुल जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो मतलब इसके साथ कंसर्न होता है, दे गो टू हाउस एंड वाइल फ्रॉम दे पिक अप दीज, दे कलेक्ट दी सॉलिड वेस्ट्स एंड द पीपल दे आर पेइंग द फीस फॉर दिस सर्विस। तो दूसरा जो है, अगर हम देखेंगे community beans, these are the beans which are installed at the particular points in a particular habitation or in a particular neighborhood or at a particular in a particular locality. तो वहाँ पे ये बिल्कुल community beans है, and people goes and they just dump or they just deposit the waste there in these community bins. तो ये भी एक तरीका है जहाँ पे ये collection होती है। तो तीसरा एक और है कर्ब साइड पिकअप होता है, या किसी वक्त सेल्फ डिलीवरी होती है, तो ये भी एक कलेक्शन का तरीका है। या किसी वक्त कंट्रैक्टेड और डेलीगेटेड सर्विसेज होते हैं, इससे भी ये मतलब यहाँ पे कलेक्शन होती है। तो इसके बाद जो चौथा स्टेप है, जो चौथा कंपोनेंट इसका है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। So far as this transportation is concerned, it simply refers to the carrying or transporting these solid wastes from their collection points to their to the suitable sites of the disposal.
जहाँ पे इसकी फिर डिस्पोजल होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, और वहाँ से वहाँ तक जो ये कैरी होते हैं इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. देयर आर बेसिकली दिस ट्रांसपोर्टेशन मेथड कैन बी कैटेगराइज्ड, कैन बी डिवाइडेड इनटू three main categories. One is known as the human powered transportation. ह्यूमन पावर्ड में क्या होता है, वहाँ पे जो कार्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, हैंड कार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ट्राई साइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं, दिस इंक्लूड द ह्यूमन पावर्ड. एंड अनदर इज एनिमल पावर्ड ट्रांसपोर्टेशन विच इंक्लूड्स द मतलब हॉर्स रन, हॉर्स ड्रॉन कार्ट्स एंड डंकी ड्रॉन कार्ट्स उसमें आते हैं. इस तरह मोटर ट्रांसपोर्टेशन, मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, वहाँ पे ट्रैक्टर्स एंड ट्रिलर्स का इस्तेमाल होता है, या टिपर ट्रक्स का इस्तेमाल होता है. मोटराइज, दिस इज रिगार्डिंग द transportation. And after transportation there is another important and key component, that is segregation. Segregation means simply the separating these solid waste materials. This process is usually performed manually, and here the solid wastes, they are just classified. They are basically separated into two types of the waste. One is known as the organic wastes, like in the मतलब food residues, उसमें आते हैं organic wastes में vegetables आते हैं, या उसमें fruit residues आते हैं, या fruits आते हैं. तो ये जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, दे आर सिंपली दे गेट डिग्रेडेड, naturally in presence of sunlight, air, and microorganisms. And another type is the inorganic wastes. These inorganic wastes, they include the plastic items, these include the these glass, these wastes. तो उसमें ये है which do not get decomposed easily or degraded. They are kept in the separate containers. And this process of separation or segregation, it is very important because it helps us in the restoration and the reuse of the solid wastes. उसके बाद जो एक important step है or the component, that is processing. After the recovery and the reuse of some of the solid wastes, but still there are remaining lot of the wastes which needs to be processed, because the solid waste, it requires large accommodations. In order to accommodate the large dumpings of these solid wastes, their volumes are first reduced. This reduction in the volume of these solid wastes, it is done by two methods. One is known as mechanical volume reduction, and another is known as the thermal volume reduction. Mechanical this or compaction volume reduction जिसको हम कहते हैं, it is performed by with the help of the compactors. तो इसमें compactors होते हैं. Compactors में क्या होता है, these are the containers in which the solid wastes, their volumes are reduced through the process of compaction. This is why it is known as mechanical or the compaction volume reduction of these solid wastes. And the another way by which we can reduce the volume of these solid waste containers, so that involves the thermal this वॉल्यूम रिडक्शन. यहाँ पे क्या होता है, जो कंबस्टेबल सॉलिड वेस्ट होता है, लाइक पेपर्स होता है, रबर होते हैं, तो इस तरह कार्डबोर्ड्स होते हैं, दे आर बेसिकली दे आर बर्नड, दे आर सब्जेक्ट टू incineration, that means they are burned at the high temperatures. But during this burning, some equipments are installed which prevents the air contamination or our environmental contamination. तो उससे भी मतलब उसको हम कहते हैं थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन. तो after the processing, the another step that is involved is the disposing. So disposing, and this we will discuss another separate heading, disposal of solid waste. अब ये इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है, that we will deal in the coming topic in the coming lecture. तो यहाँ पे आज today हम यहाँ पे ही मतलब conclude करेंगे. तो till then, fi amanillah.